recording will start. I will start to teach you. Yes, recording has been started. So see, 2 points that I have to teach you. Good evening, sir. Good evening, beta. Just a minute. Sir, what are exam timing? Actually, beta, I also don't have idea, but Okay. probably it will be in morning. अभी जो final की exam चल रही. Yet your timetable has not arrived. Yes. Timetable Not, आई क्यों कि नहीं I आवा? don't know because I not going college daily basis. I don't have idea. But दूसरे student बता सकते हैं क्या? Timetable आयो चाहिए कि भाई? Hello. हाँ, बोलो भाई क्या Hall सर सर। ticket हॉल आ गई टिकट क्या? इशू हो गया है सर हॉल टिकट भी आ गई हॉल टिकट आएगी हॉल टिकट भी आ गए बेटा देखो यस जो ओके, थैंक आपकी यू। हॉल टिकट में हाँ सर। तो नाउ सी वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट 4 सी ठीक है सी इन यूनिट 4 वी हैव डिस्कस सी दीस आर द पॉइंट्स वन दैट इज अ इंटरेस्ट under section 234 abc okay so these we have already have completed then return then assessment and then the income tax authorities ठीक है these are the chapters. So out of this, we have completed the point related to interest. Okay, we have completed the assessment. So far as return of income is concerned, see return of income, almost more than half I have completed. Okay, so you have this material in your hand. Okay, I have, see, I already have given the material, and as I don't have a वर्ड और पीडीएफ फाइल फॉर दिस मटेरियल सो सी आपके क्लास में दोनों क्लास में इन द बोथ क्लासेस आई हैव टीच यू फ्रॉम दिस रिटन चैप्टर up to the point of submission of return through the TRP. Okay, after that, whatever points are there that I have to discuss with you. So now we are on the page number 367 of this material, which is I have provided you. Okay, and chapter number 13, page 367, and in that there is 1.139c. So see, we have to complete today what? We have to complete this both point. We have to complete this remaining portion of the return that I will complete. Okay, इसमें जितना बाकी है, the remaining portion of the return I will complete. And I have shared one material today evening in your WhatsApp group for the income tax authorities. So we will discuss this income tax authorities and remaining portion of this return of income. So these 2 points are remaining, and these both points we have to complete today so that we both are get free from attending the classes. So see, the next point is the 139C. Okay. So what section 139C is that? Annexure less return. You can read it from the material. So nowadays, whatever income tax returns we are filing, see for various kind of assesses or what kind of incomes you are earning, based on that, the various forms of returns are given. So suppose if I am earning the income only from the salary, I have to file the form ITR1. Okay. So same way for various kind of suppose if he's having the suppose assessee is opting for section 44 ADAE, okay, ADA, this presumptive taxation which I have discussed with you. If you want to follow that, then you have to file the form number ITR4. Okay, so there are various forms are available. But see, in all the forms, what is common? The common thing is that whenever you file the return of income, see, you have to just file the return of income and you don't have to attach anything. Like suppose in
ROC, Registrar of Companies, MCA पे जो हमें as a company secretary, whatever forms we are filing. So along with the forms, along with the returns, we are supposed to attach a number of documents by scanning them. Okay, so we attach the document along with the form and then we file the document. Okay, that I'm talking about the Companies Act. But so far as the income tax returns are concerned, all the returns of income are attachmentless. Matlab you are not supposed to attach anything with the form of the return. You just have to provide the information in the return. Okay. So all the returns of income are the attachmentless. Okay. Now the various forms of return of income that we must know that for which kind of assessee which form is applicable, because there are 7 forms are available: ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, and ITR 7. So suppose if any assessee comes to you that I want to file my income tax return, so first of all you are supposed to ask that from which sources you are earning the income, and based on the sources from where he is earning the income. Okay, and you are supposed to determine that which form of return he is required to file, matlab which form is applicable to him. So for all the assessees, there is no common form. For various kind of assessees, there are various forms. So see, let us read it from the material that from various assessees, which kind of forms are available. So there are 7 forms are available. So for whom, which form is applicable, that we will discuss. The first form is form ITR 1. Do you have a material in your hand? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So see ITR 1. Okay, this ITR form is popularly known as Sahaj also. Okay, this form is popularly known as Sahaj form. Okay. So see, who can file this form ITR 1? So this form is for the individual. तो आपके और मेरे जैसे जो individuals है, for them this form is there. Okay. And if his total income is up to rupees 50 lakh, okay, if his total income is up to 50 lakh, okay, if his total tech income cross 50 lakh, ITR 1 will not be applicable to him. And his the first criteria is, yeah, is what? That if you want to file your return in ITR 1, you should be individual and your income should not exceed 50 lakh. Then ITR 1 can be applicable. Not only that, there are some other point also, and it includes the income from salary, income from one house property, okay, or income from other sources. Okay, matlab if you are having 2 houses, 3 houses, then also ITR form is ITR 1 is not applicable. ITR 1 is applicable to whom? Those assessees who is having the income from salary and along with there is a income from house property, but you should have only one house. Okay. Uh, Excluding the losses, matlab you should not have a carry forwarded losses also. Okay, but the positive income is there. हाउस प्रॉपर्टी है और हाउस प्रॉपर्टी में भी कैसा है, पॉजिटिव इनकम वाला हाउस प्रॉपर्टी है, तो ITR 1 लागू पड़ेगा. ओके. ITR 1 can be filed for the negative also, but see carry forwarded losses नहीं होने चाहिए. Excluding the losses का मतलब क्या है? You if this year if you are filing, you are having one house, and if you want to file the ITR 1, you can file even though there is a loss, but you should not have a carry forwarded loss. If there is a carry forwarded loss, another form is applicable. But if you are having the income from salary, so what are the criteria? First of all, you should be individual. Second is what? Your income, total income should be less than 50 lakhs. Third is your income should be either from salary or income from house property, excluding the carry forwarded losses. And third, you should have an income from other sources. मतलब other sources से भी income है आपको, ठीक है, you can file. लेकिन other sources की कौन सी income नहीं होनी चाहिए, but does not include winning from lottery. Suppose if you are having a winning from lottery, if you are winning from horse races, or if you are having a losses from the income from house property, which is carry forwarded from the last year, then you cannot go for ITR 1. तो ITR 1 में कौन कौन सी इनकम होनी चाहिए? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी विदाउट कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस, लास्ट ईयर से कोई लॉस नहीं आया होना चाहिए, तो विदाउट कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस. थर्ड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट 3 इनकम शुड नॉट बी देयर: विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, winning from races, and you should not have a carry forwarded other sources losses. Okay, then you can file form ITR 1. Okay, it cannot be filed by the individual who has a agriculture income exceeding 5,000. Okay, but if suppose see I am having a income from salary,
I am having income from one house property, and I am having few interest income, that is other sources. So logically, and my total income is not exceeding 50 lakhs, but logically I am eligible for ITR 1. But see, I am also doing the agriculture activity, and from there I have a agriculture income more than 5,000. Then again for ITR 1, I am not eligible. Okay. For who has invested in the equity shares, unlisted equity shares. कि unlisted equity shares में अगर आपने investment कर रखा है, you cannot. Okay. Or you are a director of the company. भले आप individual हो, but see at the same time you are a director in the company. ITR 1 is not applicable. Or suppose if you have claimed the deduction under section 194N, तो ये section के अंतर्गत अगर आपने कोई deduction claim कर रखा है, or he has deferred income on tax on ESOP received from the employer, okay, being an eligible startup. मतलब see, suppose if you have a deferred income tax on ESOP received from the employer being eligible for startup. मतलब see, if your employer is startup or your employer is issued the ESOP, employee stock option, मतलब आपको employee stock option दिए, it is as good as equity share but not exactly equity share, that you are supposed to exercise on future date and on that day you will going to receive the shares, that is called ESOP. Okay. तो whenever you are receiving the ESOP, देखो ESOP is as good as perquisite, आपको आपका employer कम प्राइस में शेयर देता है, तो उसका टैक्स आपको अभी नहीं देना है, बट व्हेन यू एक्सरसाइज द राइट ऑन दैट डे यू आर सपोज टू pay the tax. So that is called deferred. मतलब आपको इतना याद रखना है कि if you have received the ESOP from your employer who is a startup, then also you are not eligible to file ITR 1. So who can file? Very simple. An assessee who is an individual whose total income is more than not more than 50 lakh, who is having the income from salary, house property, but not carry forwarded losses. He should have an income from other sources, okay, but not carry forwarded losses. Winning from lotteries or winning from horse races should not be there. If you are having an income from agriculture more than 5,000, you cannot file. If you have invested in unlisted equity share, or if you are a director in the company, or if you have claimed the deduction under section 194N, or suppose if you have received the ESOP from your employer, then in that case you cannot file the ITR 1. Okay, so who can file the ITR 1 is clear to one, everyone. Okay, is it clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we will discuss the form 2, that is ITR 2. Who can file the ITR 2? Because if it is for individual and HUF, you can see now ITR 2 is for HUF also, who is not having the income from profit and gains of business and profession. देखो, here only one condition is there. So suppose if you are an individual, okay, and if you are not satisfying the criteria of ITR 1, okay, or you are a HUF. So for you, which return is there? For you, the return is ITR 2. Okay, but ITR 2 के लिए criteria क्या है? You should be either individual or either the HUF, and you should not have an income from business and profession. So suppose if you are having a 2 houses, ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो, कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? ITR 2. बट कब? When you are not carrying the business. Okay, so suppose if you, suppose I am having the income more than 50 lakhs, so I am not eligible for ITR 1, but I am not carrying the business, I am having the income from only salary, so ITR 1 के लिए eligible नहीं हो. Which form I have to file? ITR 2. Suppose I am having the income from salary, income from house property, one house property, income from other sources, but I am having the income from agriculture also more than 5,000. So for ITR 1, I am not eligible. I am not carrying the business. So I have to go for what? ITR 2. Okay. So if you are an individual and if you are not satisfying any of the criteria of ITR 1, but at the same time, if you are not carrying the business, then the best suitable form for you is a ITR 2. Okay. Now, for whom there is a ITR 3. Criteria 3 is for individual and HUF having the income from business and profession. So suppose if you are an individual or HUF and at the same time you are having the income from business and profession. So if you are earning the income from business and profession, for you the suitable form for filing the income tax return is which one? ITR 3. So suppose if you are an individual or HUF, okay. So ITR 1 is for only individual, 2 is for individual and HUF, 3 is also for individual HUF.
But 3 is for which individual and HUF were having the income from business or profession. Okay, for that kind of individual and HUF, there is a form number ITR 3. Okay, now ITR 4. It is for whom? It is for every assessees. देखो, every assessees who is opting for the presumptive taxation. So those assessees who are opting for the presumptive taxation under section 44 AD, 44 ADA or 44 AE. Okay, so suppose if you are opting for any of the section that is of presumptive taxation, in that case, you are supposed to file the form ITR 4. It is a very simple form like ITR 1. That is why ITR 1 is known as Sahaj and ITR 4 is known as Sugam. So it is very easy to file. You have to just mention the income, uska 8%, 6% compute karo. Or suppose if you have opted for 44 ADA, 50% of your gross receipt will be your income. Or यही किया है तो आपको आपकी जो नंबर ऑफ ट्रक्स आपके पास है उसके बेस पे आपको इनकम कंप्यूट करना है. तो इट इज वेरी सिंपल एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सुगम फॉर्म आल्सो. तो ITR 4 is for whom? It is for those assessees who have computed their income on presumptive basis. So for that assessees there is a ITR 4. Now ITR 5 देखो up to 4 इंडिविजुअल HUF. और देखो 4 में तो क्या है, ITR 4 है. आपको पता है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 AD कौन ऑप्ट कर सकता है? इंडिविजुअल HUF एंड इंडिविजुअल HUF एंड फर्म. ITR सॉरी 44 AD. 44 ADA कौन ऑप्ट कर सकता है? इंडिविजुअल एंड फर्म ओनली. और 44 ADA एनी असेसी कैन ऑप्ट. ओके, इफ ही इज अ रेसिडेंट. 44 AD 44 AE. ओके, तो जिसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है उनके लिए. अभी देखो ITR 5 किसके लिए? तो देखो 1 2 1 was for individual, 2 3 and 4 for individual and HUF. Sometimes 4 is applicable to firm also if they have opted for presumptive taxation. Now what is for whom there is a ITR 5? The ITR 5 is for firm, AOP, POI, LLP, and any artificial juridical person, cooperative society, local authority. देखो, other than individual and HUF and firm, all other person, sorry, even firm also. See, for all kind of assessee other than company, कंपनी एंड इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी के जितने भी असेसी है, ओके, since these people are always earn the income from one source, majority the from business. So for all these people, okay, firm, AOP, BOI, LLP, artificial juridical person, local authority, cooperative society, trust, for all there is a single form that is a ITR 5. Okay, and for all kind of companies, if you are a company, you have to file only one return, that is ITR 6. And see, for the persons required to furnish the return under section 139A, 4B, 4C, 4D, 4E and 4F, that is trusts, political parties. देखो ट्रस्ट 5 में नहीं आएगा, 5 में सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लोकल अथॉरिटी है. Trust is required to file the form ITR in the ITR 7. Political parties, institution, colleges, universities, all these are required to file the return in ITR 7. So these are the various forms of return that we have discussed. Okay. Now see, again there are some points. I hope that you have understood all forms, the कौन से SSC को कौन सा form file करना है, that we have discussed. Okay. Now the next point of discussion is that some notes are there that also we know. Let's see, all the assessees are will have a 3 options. Okay, देखो assessee के पास 3 ऑप्शन है. देखो रिटर्न जो होता है, whenever you file the return, the return should be supported by your sign. आपको रिटर्न पे साइन करना पड़ता है, ठीक है. अब ये रिटर्न तो हम ऑनलाइन करते हैं, तो how will you sign? हेलो, यस सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. other people can see the screen. हेलो यस सर. बेटा, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही एक बार एग्जिट होके वापस नहीं दिख एंटर रही है. करो. हाँ, वो जो शेयर स्क्रीन है ना, वो जो लिखते हैं वो वाली नहीं दिख रही है. देखो मैंने कुछ शेयर किया ही नहीं. अभी मेरा फेस दिख रहा है आपको? यस सर. नो सर. तो आज मैंने कुछ शेयर किया ही नहीं बेटा, मैंने कुछ शेयर ही नहीं किया है, ठीक है. आज जो सॉरी मैं सर. लिख रहा हूँ वो दिखेगा. देखो ये जो ये दिख रहा है अभी आपको, ये दिख रहा है ना?
हाँ सर, हाँ। ये हाँ, तो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ थियोरी, तो मैं आपको ऐसे ओरली बता रहा हूँ। ओके, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो लिखूंगा ना बेटा। ठीक है, लगता नहीं मुझे कि कोई जरूरत है, तो इसीलिए नहीं लिखा है मैंने। आपने ठीक है, मटेरियल का साइज किया है? ये मटेरियल बेटा, दिस मटेरियल इज इन योर हैंड, इसीलिए मैंने आपको पहले पूछ लिया कि आप ये मटेरियल लेके बैठे हैं। आपको जेरोक्स सेंटर पे मिल जाएगा, अगर नहीं है तो ये मटेरियल का कोई पीडीएफ फाइल मेरे पास नहीं है वो, और ये मटेरियल जेरोक्स सेंटर से सभी स्टूडेंट ने ले लिया है, और मैं इसमें से ही अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो नहीं है तो आप कलेक्ट कर लीजिए, अभी आप सुन लीजिए। ठीक है, फिर मटेरियल और मेरा रिकॉर्डिंग दोनों लेके बैठना, फिर से एक एक घंटा बैठ जाना, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। Now, some notes. So I have discussed with you these 7 forms of written, but see again there are certain points that we are supposed to keep in our mind. So that points are what? Let's see, whenever we file the written is a form. The form should be signed by you. Now see, अभी sign कैसे करेंगे? Nowadays the returns are get filed electronically online. So see, there is a concept of digital signature. There is a concept of digital signature. So you are supposed to affix the digital signature, okay, and by filing the मतलब by affixing the digital signature, you can file the return of income. Okay, but see, if in case this is digital signature is applicable to whom? Those assessees who is required to go for audit, those who are a company, those who are a trust, AOP, BOI. बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल, देखो एक डिजिटल सिग्नेचर 2,000 रुपए की आती है और 2 साल में वो एक्सपायर हो जाती है। तो फॉर एवरीवन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द डिजिटल सिग्नेचर। तो ये इंडिविजुअल के केस में डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है। इफ हिज इनकम इज not falling into the audit criteria, then digital signature is not compulsory. So in that case, how you can verify the return? You have a two option. At the time of submitting the return, you can electronically verify the return, and that will be verified by OTP. So if your PAN is linked with the Aadhaar, you will receive the OTP, and by entering the OTP, you will submit the return. It is deemed that you have signed the return. आपने OTP से लिखा है, मतलब you have verified that कि भाई ये रिटर्न मैंने ही फाइल किया है, तो उसको साइन किए बराबर ही है। और एक तीसरा ऑप्शन है कि सपोज आपके पास डिजिटल सिग्नेचर ही नहीं है, यू डोंट हैव अ PAN link with the Aadhaar. Or suppose due to some reasons, if you are unable to get the OTP on your mobile, then in that case, you can, once you submit the return, see one acknowledgement will appear. They ask that, do you want to verify with OTP or verify later? So if you choose verify later, then return will get uploaded, and one acknowledgement will come that you have to download and print out, and on that you have to sign, and that signed copy you are supposed to send the central processing center which is situated at Bangalore. Okay, so you have a three option to sign the return. Either you can sign digitally, second you can verify by OTP, e-verification बोलते हैं, और if you don't want to do that, then physically also we can verify, submit the return, acknowledgement will appear that you have to print out, sign the same, and send the signed copy at the central processing center which is situated at Bangalore. And once it will be reached there, then after your return will get start processing. In case of digital signature and OTP, you submit, immediately the processing of return will start. Okay, so see, assessee have a following three options of filing the return of income electronically. Like he do the e-filing with digital signature. Second thing is what? He can do the e-filing with electronic verification code. Okay, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड मतलब ओटीपी, ईवीसी बोलते हैं, ओटीपी है, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन इज व्हाट? यू हैव अ option to filing the ITR 5. ITR 5 is nothing, it is a Roman 5. It is not that pi in a numeric. It is a Roman 5. So this return, this is nothing. It is an acknowledgement on submitting the return which appears uh, uh, on your screen that you are supposed to download. On that you have to sign, and you are supposed to send to the CPC. CPC means Central Processing Center. Okay. Again, see, I have told you that ITR 1 कौन फाइल नहीं कर सकता?
उसके अलावा भी देखो कुछ नए पॉइंट है कि ITR1 दूसरे भी कुछ लोग फाइल नहीं कर सकते। कौन ITR1 दूसरा नहीं कर सकता? देखो, ITR1 cannot be filed by the person who is a resident person other than not ordinarily resident in India. मतलब he is a non-resident or ordinarily but not ordinarily resident. Okay, मतलब he is a resident person, मतलब उसका residence status क्या है? Resident or ordinarily resident. If he is a resident but not ordinarily resident and non-resident, उसके अलावा का कोई resident person है and has any asset which is situated outside India, or he has earned the income from आउटसाइड इंडिया, सोर्स ऑफ इनकम इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो जिसका सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया में है, या तो फिर उसकी असेट आउटसाइड इंडिया में सिचुएटेड है। ओके, भले वो सैलरी इनकम अर्न कर रहा है 50 लाख से कम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पॉजिटिव है, अदर सोर्सेज में से इनकम है, बट दैट इनकम इज नॉट फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। बट एट द सेम टाइम इफ ही इज having a asset situated outside India, he cannot file the ITR1. Okay, or see, suppose he has claim the exemption, okay, अंडर सेक्शन 10, 10A, 10AA। सो ये अलग अलग सेक्शन है जिसमें उसने एग्जम्पशन क्लेम किया है। तो सेक्शन 10C क्लेम्स द एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम एक्सीडिंग, अगर उसने एग्जम्पशन क्लेम किया है, सेक्शन 10 आपको पता है कि वो अलग अलग एग्जम्प्टेड इनकम है, उसमें एग्जम्पशन क्लेम किया है और दैट एग्जम्पशन अमाउंट इज मोर देन 5,000, देन ऑल्सो ही कैन नॉट क्लेम दी फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इन ITR1। ओके, देखो ITR4 इट इज अ सुगम फॉर्म, वो कौन नहीं फाइल कर सकता? वो तो आपको मैंने बताया, अगर इंडिविजुअल और HUF है और उनका अगर रेसिडेंस वो रेसिडेंट है अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब वो प्योर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, और इफ ही इज डिराइविंग द इनकम फ्रॉम असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और ही इज द साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट सिचुएटेड इन इंडिया, or he has claimed the relief under section 90, 90A, 91, okay, or if he is claiming the exemption under this section 10, 10A, 10AA more than rupees 5,000, then this assessee cannot file the ITR4. ITR4 is a sugam form, those who are claiming the इनकम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD, 44ADA, 44AE, ये सेक्शन वालों के लिए ITR4 है, लेकिन साथ में उसका अदर इनकम आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, तो that person cannot file ITR4, but he has to go back for any other form which is applicable to him। ठीक है, अभी देखो, nowadays all the returns, see, पहले क्या था, यू हैव टू बाय, पहले हम रिटर्न कैसे फाइल करते थे कि ये अपने मेन बिल्डिंग के सामने युग धर्म है, ठीक है, वहाँ ITR के फॉर्म्स मिलते थे, तो हम खरीद के लाते थे फॉर्म, और वो फॉर्म को हाथ से पेन के से भरते थे, उसका इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन बनाते थे एंड उसके साथ अटैच कर देते हैं, एंड देन वी वर सबमिटिंग टू द इनकम टैक्स ऑफिस, दिस वाज द प्रोसेस। बट नाउअडेज all the returns are get filed online, so all the returns are e-return। okay, so all the ITR forms are filed electronically, आपको सभी इनकम टैक्स के रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने हैं। however, where the return is furnished in ITR1 or ITR4, the following person has the option to file the paper form। देखो दो टाइप के ऐसे ITR1 और ITR4, ये दो रिटर्न अभी भी फिजिकली फाइल हो सकते हैं, लेकिन किसके लिए? नॉट फॉर एवरीवन, इट इज फॉर होम, इट इज फॉर द सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स द पर्सन हु हैज क्रॉस द एज ऑफ 80 years। 80 years क्रॉस हो गया, उसको कंप्यूटर नहीं आता होगा, तो उसके लिए ऑप्शन है that he can file the return physically। okay, और वो भी कब? when he is eligible for ITR1 and ITR4। okay, or if the individually or HUF having the income up to rupees 5 lakh and not claiming any refund। okay, मतलब आपने एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया है, TDS भर दिया, और इफ यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, तो ITR आपको ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ेगा। बट सी इफ यू आर नॉट क्लेमिंग एनी रिफंड एंड इफ योर टोटल इनकम इज लेस देन 5 lakh, still there is option that you can file physically, but see ये लिखा है यहाँ पे, practically nowadays there is no filing of return in physical form। okay, देखो, there are few assessees with if they cross the limit of 1 crore, 3 crore, or 10 crore, that I have discussed with you, section 44AB audit। okay, so those assessees who are eligible for audit, they have to file the audit report also, they have to obtain the return, sorry, audit report from the chartered accountant, or chartered accountant
ही उसका रिटर्न मतलब ऑडिट रिपोर्ट वो कब होता है, 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, वो आपको पता है। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल फिजिकली। तो देखो, ई ऑडिट रिपोर्ट, ई फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शैल बी मैंडेटरी फॉर फॉलोइंग केसेस। ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44 AB, मतलब जो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं उनके लिए। 192 ही आपको मैंने बताया, जो that is for the transfer pricing cases. If you are doing the transaction internationally with the related party, then 92E वाला audit applicable होता है. So in that case also you are supposed to submit the audit report in electronical form. For the audit report under section 115JB in respect of MAT consumption computation. So MAT is a minimum alternate tax. It is not part of our syllabus. I'm just explaining you that what is MAT. Like suppose there are companies. So company is liable for 30% tax. But see, initially, whenever the companies get incorporated, it is installing its plant. So in that case, what happens? It is having a huge capital expenditure, or it may have claimed the deduction under section 35, 35. So in that case, there is a possibility that see company may incur the huge losses in the initial year, and then in the initial year, company is not paying the tax. Okay. सपोज शुरुआत के पहले 10 साल तक कंपनी टैक्स नहीं भरती और 11वें साल में कंपनी को एकदम प्रॉफिट होता चालू होता है और कंपनी is earning too much income, so it has to pay more taxes. And at that time company may face the difficulty that in first 10 years I have not paid the tax, now from the 11th year I have to pay the tax. So in that case, see, for companies there is an option that even though you are incurring the losses, see, as I have calculated the book profit in case of partnership firm to determine the remuneration. Same way in case of companies, the book profit is calculated, and on book profit you are supposed to pay the tax even though on actual income you are having a loss. Okay, but still you are not supposed to give certain deductions, so your company will come in the profit, but actually there is a loss, and on that profit you start to pay the tax even though there is no, you are not eligible for paying the tax. बट बुक प्रॉफिट मतलब कुछ डिडक्शन ना देके आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो और सी यू यस यस बेटा जो ओके सो सी इनिशियली यू have मतलब you have to start to pay the tax even though you are incurring the loss, and then after जब आपका एक्चुअल प्रॉफिट होना चालू होगा तो क्या होगा, अभी आपने जब लॉस करते थे तो ही टैक्स भर दिया है, अब जब प्रॉफिट करना चालू करोगे तो एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू पे द टैक्स, वॉट एवर दिस मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यू हैव पेड that will get adjusted against the actual tax payable. Okay, so even though you are having a loss in that, you have to pay the minimum tax that is known as minimum alternate tax that you will going to learn in MCOM final. So those assessors, those companies who have opted for minimum alternate tax, they are also, ये मैट का जो क्रेडिट पड़ा है कि लॉस वाले सालों में उसने टैक्स भरा है, नाउ तो उसने लॉस वाले साल में 15-20 लाख रुपया टैक्स भर दिया, अभी 11वें साल में प्रॉफिट हुआ टैक्स भरने का है ना, तो जो आगे वाला टैक्स पे किया दैट इज गेट एडजस्टेड, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ मैट क्रेडिट. तो इफ यू आर यूजिंग द मैट क्रेडिट यू आर सपोज टू गो फॉर द ऑडिट अंडर सेक्शन 115JB. क्योंकि अगर आप ऐसा ऑडिट करवा रहे हो तो यू आर सपोज टू फाइल दी audit report under section 115JB also electronically. Okay, so that also you are supposed to file electronically. Okay, so we have discussed the various type of return and we have discussed that all the returns forms are required to be filed electronically. Okay, now see, who shall verify the return? But see, whenever the return of income is there, whenever there is a return of income, okay, you file. But see, I have told you that return of income should be signed by someone. Okay, there should be a someone who is a responsible, that if anything is mentioned in the return is a right, and if something wrong is written, then I am responsible. Okay, so there should be a someone who is supposed to verify the return. Okay, so in case of suppose the individual hai, who will verify the return? So in case of HUF, who will verify the return? That is mentioned here. So let us discuss who will verify the return. So in case of individual, who will verify the return? By the individual himself. क्योंकि वो खुद अपना रिटर्न वेरीफाई करेगा. और देखो, अगर इंडिविजुअल कंसर्न इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, सपोज द डे ऑन विच यू आर फाइलिंग द रिटर्न दैट पर्सन इज एब्सेंट, ओके, इन दैट केस
or he is a mentally incapacitated. Okay, suppose कोई retarded है mentally. Okay, if he is a mentally retarded, then in that case, okay, it is possible that mentally retarded उसके नाम पे 10 लाख रुपए की एफडी पड़ी है, इंटरेस्ट आ रहा है. Okay, so for you, that person also you have to file the return. But or suppose that person is not in India, or see, uh, so in that case, or see, is incapacitated from attending his affairs, or where for any other reason it is not possible for an individual to sign the return, then by any person authorized by him on his behalf. So 99% may, in case of individual who will verify the return, assessee himself. But suppose if that assessee is absent or he is not capable to verify the return, then whosoever he has authorized in a writing, that another person will verify the return. Now, in case of HUF, who will verify the return? तो HUF में बहुत सारे member होते हैं, but one person is the head, that is known as कर्ता. तो see, कर्ता will verify the return of income. Okay. So by, or suppose if the कर्ता is absent from India, or कर्ता is incapable, okay, there is a possibility that कर्ता बीमार हो गया है, mentally capable नहीं है, okay, then any other adult member, तो family का कोई भी adult member है, adult मतलब who is not a minor, can verify the return. तो 99% केस में कर्ता करेगा. अगर कर्ता नहीं है और या तो फिर कर्ता is a mentally retarded, then any person of the HUF who is an adult can verify the return. In case of company, who can verify the return? In case of company, the managing director of the company, okay, अगर thereof, or where the company for unavoidable reason, if such managing director is not able to sign, or where there is no managing director, अगर हर एक कंपनी में एमडी होना ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई कंपनी में सभी डायरेक्टर ही है, कोई एमडी नहीं है कोई, तो इन दैट केस एनी डायरेक्टर कैन वेरीफाई द रिटर्न. ओके, अगर एमडी है तो एमडी को ही करना पड़ेगा, एमडी नहीं है तो, और एमडी है और वो कैपेबल नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर, अगर एमडी है ही नहीं तो भी कोई भी डायरेक्टर कैन वेरीफाई द रिटर्न. इन केस ऑफ फर्म, managing partner, or suppose for unavoidable reason managing partner is not available, then any partner, okay, can verify the return. In case of LLP, सेम डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं. एलएलपी में जो एलएलपी को मैनेज करता है उसको बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, और सपोज डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, ओके, और ही इज नॉट कैपेबल टू साइन, देन इन दैट केस एनी अदर पार्टनर कैन वेरीफाई द रिटर्न. ओके, लोकल अथॉरिटी में तो कि लोकल अथॉरिटी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, ओके, मतलब कमिश्नर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ही विल वेरीफाई द रिटर्न. ओके, उसके केस में मेंटली रिटायर्ड नहीं हो सकता, अगर मेंटली रिटायर्ड है तो कमिश्नर नहीं होगा, तो उसमें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है. पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल पार्टी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ही विल वेरीफाई द रिटर्न. इन केस ऑफ एओपी, तो एनी मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन वेरीफाई द रिटर्न. पर सी, इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो सी, by that person or by some person competent to act on his behalf. तो जो भी, लाइक सपोज ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का ट्रस्टी विल साइन द रिटर्न. ओके, तो दीज आर द पीपल हु आर सपोज टू साइन. साइन नहीं करना है उसको, उसका नाम लिखना है. साइन तो होगा तो डिजिटल साइन होगा, ठीक है, और उसका नाम लिखना है कि आई सो एंड सो हियर बाय वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम एंड ऑल द फैक्ट्स मेंशन इन द रिटर्न ऑफ इनकम आर ट्रू. ओके, एंड इफ देयर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, ऐसा करके वो अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाता है, ठीक है. डिजिटल नहीं है तो ओटीपी से वेरीफाई करता है, वो नहीं है तो वो फिजिकल रिटर्न निकाल के उधर भेजता है सीपीसी में. बट सी, दीस आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू वेरीफाई द रिटर्न. ओके, नाउ सी, this is section 143.3a, e-assessment scheme. Now what is this e-assessment scheme? I have discussed with you in assessment वाला chapter में, there is a faceless assessment, वही बात यहाँ कही गई है. Again, that we already have discussed the faceless assessment, वही section है कि e-assessment scheme थी for removal of existing human inter. ધનશ્રી, આ બાયણું બંધ કરી દેજો, તો પેલું પણ બંધ કરી દે, એવું બંધ કરી દે. રિસીવ અવાજ કેમ કરો છો? સારું સારું સારું, બંધ કર. સોરી ફોર ધ ડિસ્ટર્બન્સ. બસ તું જાને દોસ્ત, બહાર પછી વાત કરીશું આપણે. યસ,
So e-assessment. So government is also want that के the assessment के अंदर जितना कम से कम human interference हो उतना अच्छा है. Physical meetings नहीं होनी चाहिए. Otherwise it will result into bribe. Okay, it will result into wrong practices, and that is why the entire assessment process is also e-assessment. So see, for removal of the existing human interference assessment procedure, the assessment is handled by specific functional unit on the basis of automated allocation system. मतलब क्या सब लोग रिटर्न फाइल करते हैं और वो सिस्टम ही क्या करते हैं, अलग अलग असेसिंग ऑफिसर को वो रिटर्न भेज देती है. तो उसको पता नहीं होता कि मेरे वार्ड का ही आया. इंडिया के कोई भी कोने से रिटर्न उसके पास वेरीफाई होने के लिए आ सकता है. वो अलोकेशन सिस्टम इज अलोकेटिंग द रिटर्न. एंड सी असेसमेंट यूनिट विल बी एनोनिमियस, मतलब वो किसी को पता नहीं होगा कौन सा यूनिट कहाँ पे है, उसका कोई नाम नहीं होगा. ओके, दैट इज वाई एनोनिमियस. एंड ऑल द कम्युनिकेशन कैन बी मेड एक्सक्लूसिवली इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. आपका जो लॉगिन आईडी होगा इनकम टैक्स में, वहां जाके ही आपको आपका ये असेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करना है. And no personal appearance by any assessee. This scheme covers the section 143.3. 143.3 I have discussed with you. What is that? This is scrutiny assessment. And 144, that is a base judgment assessment. दोनों तरीके से के assessment के अंदर a faceless assessment होगा, that we have discussed. Okay. Now see, our name of the chapter is the return. See, so far as I have discussed with you the normal return, then we have discussed the belated return. We have discussed the revised return, we have discussed the defective return. Okay, and these various forms of the return and who can verify the forms of return, that we have discussed, or what is the process of filing it is, that we have discussed. Now there is one another form of return is remaining, other type of return, that is known as updated return. Okay, now in your material this updated return is given, but उसमें बहुत सारा लंबा लंबा लिखा है, or that is not necessary for you to understand. Whatever are the important point that we should have to understand, and that is why I have prepared one another material on this updated return. Okay, so that I will going this file I will share with you, okay, after this lecture. Okay, and see this updated return, just a minute. Mm, yes, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज तो हो गया. जस्ट मिनट, एक बे मिनट में, मिनट मैं अपडेटेड रिटर्न का मटेरियल में यहाँ से, सॉरी व्हाट्सएप पर मैंने रखा था. So let me download the same and then we'll discuss. Yes. So this updated return we are not doing from this material which is in your hand, but we will going to do from this material. Okay, which I will share with you. Okay, after completion of this lecture. Can you see on the screen this material? Hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let us start to discuss this. See, updated return is also a kind of a return. Okay, but what is this? See, this is also kind of a return. Okay, what it says, updated return का मतलब ये होता है कि आपने once you have filed the return of income, okay, within the stipulated period of time. Okay, stipulated period of time, you know, that is 31st October or 31st July. And if you lost that date, then after the due date also you can file the return, that is the 31st December or before completion of the assessment year. Okay, assessment, not assessment year. So that I have discussed with you कि latest last में last return आप कब तक file कर सकते हो, 31st December of the assessment year. Beyond that you cannot file the return. Okay. Now suppose if you are forget to file the return. Okay, suppose see this is the assessment year. Now what is the updated return, you understand. देखो ये ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है. Suppose this is the assessment year 2024-25. Sorry, yes, this is 24-25 year our assessment year. Okay, now it start on which date? As on 1st April 2024, and when it will end? It will end on 31st March
2025. And in this year, which year income you will report? See, whatever income you have earned during the previous year 2023-24, on this income, you will going to pay the tax in this year. You will pay the tax on this. You will file the return in this year. Okay, so whenever you file the return in this year for the previous year 2023-24 in the assessment year 24-25, see, you have a two dates applicable. For few assessee, it is 31st July. And for few assessee, it is 31st October. Okay. So if you file the return within this due date, it is the normal return. Okay. Now see, if you miss this date, but still you have an option that before 3 years from the end of the assessment year, on or before 31st December 2024, you can file your बी ये पीरियड के अंदर रिटर्न फाइल किया तो दैट इज नोन एज द belated return. Okay, so you can file, but suppose if you have missed this date also, suppose if you have missed this date also, 31st December is also missed by you, can you file the return? So here answer is yes, you can file the return beyond this date also. But see, or suppose if you have filed the return in this period, during the whole period, if you have filed the return, okay, can you update? देखो रिवाइज की बात नहीं करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कैन यू अपडेट द रिटर्न. So again the answer is yes. मतलब update a return means what? During the given period of time you have not filed, and if you want to file, or during the period you have filed but you want to update, okay, that you can file. So yes, you can file the return. और देखो ये रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? You can file up to 24 months from the end of the relevant assessment year. मतलब ये assessment year complete हो गया, उसके बाद के 24 months में, okay, you can file your updated return. ये इतना पीरियड तक आप updated return फाइल कर सकते हो. मतलब updated किसको बोलोगे? आपने फाइल ही नहीं किया और you want to file, okay, or if you file but if you want to update it, then also you can file. Okay, लेकिन updated return में आपको update क्या करना है? तो देखो, अपने फाइल ही नहीं किया मतलब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा पता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम क्या है, लेस देन मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जम्पशन, कि आपकी इनकम कम है इसीलिए आपने फाइल नहीं किया होगा, या तो फिर आपकी इनकम थी जिसको आपने डिस्क्लोज कर दिया. बट सी, नाउ इफ यू वांट टू डिस्क्लोज दैट माय इनकम इज नॉट लेस देन दिस, और माय इनकम इज, मतलब आप not less than maximum limit of exemption, or my income is not which is mentioned in the return which I have already filed by you, but it is more than that. मतलब आपको आपकी इनकम ज्यादा दिखानी. आपने पहले बोला था कि मेरी इनकम 0 है, अभी आप बताना चाहते हो नहीं मेरी इनकम 1 लाख है, ठीक है. अच्छा, फिर आपने पहले बताया था कि मेरी इनकम 1,50,000 है, नाउ यू वांट टू सो दैट माय इनकम इज 2,50,000. मतलब देखो दोनों में कॉमन क्या है? आप आपकी ज्यादा इनकम बताने चाहते हो. मतलब यू कैन अपडेट व्हाट? यू कैन अपडेट इनकम, और वो भी कैसी वाली? मोर इनकम बढ़ाना चाहते हो आप, देन यू कैन फाइल दी अपडेटेड रिटर्न. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको आपकी इनकम कम करनी है और उसके रिवाइज करके नहीं कर सकते, ओके, इफ यू वांट टू शो योर लॉसेस, आप नहीं कर सकते. हाँ, कोई इनकम बढ़ानी है कर सकते हो. आपने मतलब पहले 0 दिखाया था, मतलब फाइल ही नहीं किया, नाउ यू वांट टू अपडेट, यू कैन डू सो. ओके, और आपने दिखाया ही नहीं, दिखाया था लेकिन कम दिखाया था और उसको आप ज्यादा बताना चाहते हो तो कर सकते हो. तो दैट इज कॉल्ड अपडेटेड रिटर्न. तो इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न यू आर showing that I am earning more than whatever I have not disclosed or I have disclosed was less. So see, in this situation, the uh, updated return can be filed, or that can be filed up to 24 months from the end of the assessment year. assessment year complete होने के 24 months तक आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो. बट उसमें आपको करना क्या है? आपको आपकी इनकम बढ़ा के दिखाना ही है. दैट इज कॉल्ड अपडेटेड रिटर्न. तो इसमें गवर्नमेंट आपको करने देगी फाइल. क्यों? आप इनकम बढ़ाते हो तो टैक्स बढ़ेगा, उसको तो फायदा ही है. दैट इज वाई अप टू 24 months द टाइम इज गिवन टू यू. तो व्हाट इज द अपडेटेड रिटर्न? देखो, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय द पर्सन regardless of that whether he has previously furnished the return under section 131, that is a normal return, 139(4), that is belated return, or 139(4), that is the revised return. तो इसमें से कोई भी रिटर्न आपने फाइल किया है
या तो फिर नहीं किया है, बट इफ यू वांट टू अपडेट दैट, मतलब यू आर नॉट फाइल बट स्टिल यू वांट टू फाइल, or suppose if you have filed but if you want to update the income, you can file the updated return for the specific assessment year. This updated return must be filed in the prescribed form and verified as required, containing the necessary particular in the relevant assessment year. मतलब आपको जो भी फॉर्म एप्लीकेबल है वही फॉर्म में आपको रिटर्न फाइल करना है, अपडेटेड रिटर्न। उसमें ऑप्शन आता है विच काइंड ऑफ रिटर्न यू वांट टू फाइल, नॉर्मल नॉर्मल रिटर्न या फिर रिवाइज, अपडेटेड, ओके, रिटर्न ऑफ लॉस। तो आपको ये दिखाना होता है, तो ये दिखा के आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो ठीक है, आपको स्पेसिफिक फॉर्म में ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और आपको प्रॉपरली उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो, इन विच सिचुएशन दिस अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड, दिस अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड इफ देयर इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। मतलब आप बताना चाहते हो कि मुझे लॉस हुआ है, लॉस में आपको इनकम दिखानी है तो ये रिटर्न फाइल करो, आप भूल गए हो, ठीक है, और यू नो दैट लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड विदाउट फाइलिंग रिटर्न, तो आप बोलोगे लेट मी शो द लॉस एंड फाइल द अपडेटेड रिटर्न। नो, इफ यू वांट टू शो द इनकम देन एंड देन यू कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न, ओके। और देखो, द रिटर्न डिक्रीजेस द टोटल टैक्स लायबिलिटी, मतलब इफ यू वांट टू फाइल द रिटर्न, इफ यू ऑलरेडी हैव फाइल्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) नॉर्मल रिटर्न, बी लेटर रिटर्न या तो फिर रिवाइज रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल कर रखा है, and in that if you want to update and if you want to try to convince to the income tax authority that my income is going down and my tax liability is going down, no, this is not permitted. If you want to increase your tax liability, if you want to show your income, you can file the ITR in updated return, okay। देखो, रिटर्न रिजल्ट इनटू रिफंड और इंक्रीज इन दी रिफंड, अगर आपने जो ऑलरेडी टैक्स पे किया है उसमें से अगर ये अपडेट करने के बाद आपका रिटर्न रिफंड वापस मिलने वाला है आपको, या तो फिर जो रिफंड मिला है वो और वापस मिलेगा। अगर रिटर्न मतलब आप गवर्नमेंट से वापस कुछ लेना चाहते हो तो अपडेटेड रिटर्न, हाँ गवर्नमेंट को देना है टैक्स, यू कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न, ओके। और सी देखो, अगर असेसी है उसके लिए उस सर्च वारंट इश्यू हुआ है अंडर सेक्शन 139(1) और उसके यहाँ सर्वे चालू हो गया है, या तो फिर उसने इसके लिए नोटिस मिली है उसको, या तो फिर उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू हो गई है। और सी असेसी के असेसिंग ऑफिसर के पास असेसी की इंफॉर्मेशन है कि असेसी कोई एंटी करप्शन एक्टिविटी में या तो फिर प्रॉपर्टी फोरफीचर के अंदर इन्वॉल्व है, तो ऐसे असेसी वन ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, ओके। हाँ, loss or carry forward adjustment, if person has sustained a loss in the previous year and he already have filed the return within the prescribed time, मतलब उसने ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे फाइल किया है, दे में फाइल द अपडेटेड रिटर्न टू कवर द लॉस इन द इनकम। सपोज समझ लो कि मैंने एक रिटर्न फाइल किया है और उसके अंदर मुझे कोई लॉस हुआ था, दैट आई वांट टू डिस्क्लोज और टू मेंशन दैट इफ आई वांट टू अपडेट द रिटर्न आई कैन, बट सी उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो however any part of the loss, unabsorbed depreciation or tax credit carry forward will need to be adjusted accordingly in the subsequent year, मतलब नेक्स्ट ईयर में वो एडजस्ट होता जाएगा, लेकिन ये साल का तो टैक्स लायबिलिटी आपका कम नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप लॉस मेंशन करना भूल गए तो मेंशन करके नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कर सकते हो, बट सी यू कैन नॉट गेट टैक्स बैक, और आपका टैक्स लायबिलिटी कम करने वाली सिचुएशन आती है तो यू कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न। तो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न? द अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो भी असेसमेंट ईयर है उसके एंड के बाद आपको 24 मंथ्स तक आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, देखो आपने पहले रिटर्न फाइल ही नहीं किया है या तो फिर रिटर्न फाइल किया है और आपने इनकम ज्यादा दी है, आप ज्यादा इनकम दिखा रहे हो, now see you have to pay the tax, so how the income tax authority will adjust that? So see, update return can be accompanied by the payment of taxes as determined after फॉलोइंग, मतलब सी आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर दिया है, टीडीएस टीसीएस पे किया है, आपने कोई रिलीफ क्लेम की है, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया, आप ये आपको मैंने बताया कि अनक्लेम टैक्स क्रेडिट है आपकी और एडिशनल इनकम टैक्स आपने पे किया है, तो ये सभी चीजों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसीडर करेगा। उसके बाद आपकी अपडेटेड इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा एंड दैट टैक्स यू आर सपोज टू पे। देखो, अगर केसेस ऑन रिटर्न फाइलिंग हिस्ट्री, देखो
अगर असेसी ने पहले ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है, ठीक है, और अभी उसको अपडेट कर रहा है, तो टैक्स एंड इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड एंड पेड बिफोर द फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न। आपने ऑलरेडी फाइल किया है, अभी आप अपडेटेड करना चाहते हो, तो दूसरा टैक्स जो आपको भरना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट करो, उसको पे करो। आप लेट फाइल कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट भी पे करो, एंड देन यू कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न। ओके। और सी, अगर आपने पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, सॉरी सॉरी, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और पहली बार अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो, मतलब मैंने आपको दो सिचुएशन बताई कि यू हैव नॉट फाइल्ड एट ऑल। ओके, पहले फाइल ही नहीं किया था टाइम पे, अभी फाइल कर रहे हो, तो उसका टैक्स पहले पे करो, फिर रिटर्न फाइल करो। और अगर आपने रिटर्न पहले फाइल किया तो जो भी एडजस्टमेंट करने हैं रिलीफ के, वो सब एडजस्टमेंट कर दो, और जो भी एडिशनल टैक्स पे करना है वो पे करो, एंड देन यू कैन फाइल दी अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, ये दिस इज नॉट अ पॉइंट रिलेटेड टू updated return. Okay, so this I am cancelling. So this is the point of updated return, and with this your chapter return is over. I will share this material after this lecture with you. Okay, after this lecture I will share this material. So updated return, you don't read from the material which I have provided in the Xerox center, but you can refer from here. That file I will share with you. Once I will make the proper formatting in this, I'll share you once the lecture is get over. Okay, so with this your detail नोट ऑन, मतलब योर रिटर्न वाला जो चैप्टर है दैट इज ओवर। ठीक है, नाउ देयर इज अ अनदर चैप्टर। यू वांट अ ब्रेक? हेलो यार, शैल आई कंटिन्यू? हेलो, देयर इज वन अनदर चैप्टर। कंटिन्यू करूं ना Continue. बेटा? ओके Yes. ओके। So there is one another chapter. एक पेज का ही, I will take hardly 10 to 15 minutes to Yes. complete this chapter. That is the income tax authorities. Okay, for this I already have the shared the material with you on income tax authorities. So we must have a awareness that which are the various income tax authorities and what are their powers, what they can do. Okay, सो इंट्रोडक्शन देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट का, वो कैसे ऑपरेट करता है, who are their officer, what are their power, what they can do, we must know. Okay, so if we want to do the practice with the income tax, in the income tax we must know कि भाई कौन से ऑफिसर का क्या पावर है, कौन क्या कर सकता है। ओके, तो ये सब चीजों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कौन से ऑफिसर के पास क्या पावर है, किसके सामने मैं अपील कर सकता हूँ। ओके, so you must have a clarity about which authority is having what power and what is their work. If this clarity is there, then whenever you deal with the income tax offices, see, your work will be easy. But suppose if you are not aware, then it will create a lots of problem to you. Okay, a few days back I was there in the main building staff room. One student has come there and asked me, sir, where is the dean sir's office? So I told him that it is next to staff room. You go there. And then after few minutes, he back. એકદમ આમ રડવા જેવું મોડું લઈને આવ્યો. મેં કીધું શું થયું લા? What happened? એ કઈ નહીં sir, I went to the dean sir for asking him that when will be the internal answers, internal exams answers, it will be distributed. Okay. I asked him that you should ask in the office or concerned teacher why you have went to the dean sir. Sir, મને કે બહુ ખતરા. હવે જેની, હવે dean sir ને થોડું તમારો ટીચર ક્યારે આન્સર શીટ વેચવાનો છે ખબર છે કે, તો કે કોઈ જે જવાબ નથી આપતો તો ડીન પાસે ગયો તો ડીને એને ખખડાયો. તો એ જ વસ્તુ છે, અગર whenever you don't know someone's power or someone's work, okay, और डायरेक्टली किसी को अप्रोच करोगे तो क्या होगा? You will not get a proper result. But if someone has a proper authority, okay, and you will ask him, then you will get the answer. अभी एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा, सर एग्जाम का टाइम क्या है? At least concerned with the exam. Okay, I'm a teacher. You should ask in the office, so you will get the answer. Okay, so it should be like that कि you should know that किसका क्या काम है. Okay, तो इनकम टैक्स में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू मस्ट नो दैट कि कौन सी अथॉरिटी के क्या पावर है, कौन क्या काम कर रहा है, तो योर वर्क विल बी स्मूथ. So that is why we must have a clarity about that. Who are the what are the various income tax authority, what are their work and what they do. तो देखो, let us discuss it from the material.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन इंडिया इज ऑपरेट्स अंडर द इनकम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओके, देखो पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और ये डिपार्टमेंट रेवेन्यू कौन सी मिनिस्ट्री का पोर्शन है? इट इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंदर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है। ओके, इट एडमिनिस्टर्स द डायरेक्ट टैक्स लॉज सच एज इनकम टैक्स। मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का लॉ का पूरा मैनेजमेंट करता है। देखो, इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग दिस लॉज। मतलब इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसका प्रॉपर इंप्लीमेंट हो, प्रॉपर एनफोर्समेंट हो, और एवरीवन शुड पे द टैक्स, उसकी केयर कौन करता है? दिस डिपार्टमेंट इज डूइंग दिस। ओके, and C, it is responsible for implementing and enforcing these laws and ensuring the compliances and collecting the tax. So everyone should do the proper compliance and government को tax collect करके देने का काम ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री का पोर्शन है? इट इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। The role is critical in maintaining the integrity of the taxation system and ensuring the revenue collection for the government expenditure and preventing the tax evasion। इसका रोल क्या है कि भाई प्रॉपर कॉम्प्लायंस हो, गवर्नमेंट के लिए अच्छे से अच्छा टैक्स कलेक्ट हो, और टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी को रोका जाए, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन। ओके, ये काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। एंड फॉर दैट पर्पज इट हैज क्रिएटेड वेरियस अथॉरिटी। So here the hierarchy is described. मतलब who is on the top, below that who are the authorities. So that authorities are described here. So hierarchy of the income tax authorities is designed to ensure the efficient administration and enforcement of the tax laws at each level. Okay, let us discuss the various authorities. देखो सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे टॉप पे कौन है? तो सबसे टॉप पे दैट इज एपेक्स अथॉरिटी एंड दैट इज अ सीबीडीटी, दैट इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इनकम टैक्स की इसके पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अकेला तो काम नहीं करेगा, तो उसने क्या किया है? इट हैज क्रिएटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ओके, वो हर एक स्टेट का एक प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है। उसके अंदर एक स्टेट के अंदर हर एक सिटी के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कमिश्नरेट होता है। जैसे हमारे बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का इनकम टैक्स कमिश्नर का ऑफिस है, वो किसका ऑफिस है? इट इज ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन होता है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे जो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक इनकम टैक्स ऑफिसर होता है टॉप पे, उसको बोला जाता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अभी वो चीफ कमिश्नर के अंदर बहुत सारे कमिश्नर आते हैं। ओके, तो दे आर दी जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ओके, एसोसिएट कमिश्नर, ऐसे करके बहुत सारे कमिश्नर, लेकिन वो सब चीफ कमिश्नर के अंदर काम करने वाले कमिश्नर है, और वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द इनकम टैक्स दे आर हैंडलिंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर द प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। देखो अभी ये कमिश्नर के अंदर बहुत सारे कमिश्नरेट में नंबर ऑफ कमिश्नर होते हैं। ओके, और इसका हेड कौन होता है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके साथ एक पैरेलल, देखो ये इनकम टैक्स अथॉरिटी इज डूइंग द वर्क ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स, सो देयर इज अ चांसेस दैट दे मे एक्सप्लॉइट द पीपल। दैट इज व्हाई द टैक्स पेयर्स should not get exploited and taxpayers should be saved. So if they feel that some income tax officer or commissioner has passed the order, and if I am aggrieved by that order, and he's asking that you should pay this much tax, but I believe that I'm not liable to pay this much amount of tax, you can go for the appeal against them. Okay, तो ये अथॉरिटीज जो है उसको कंट्रोल में रखने के लिए एक दूसरा पैरेलल अथॉरिटी बनाई है, दैट इज कॉल्ड अपीलेट अथॉरिटी। सो अपीलेट अथॉरिटी क्या है? देखो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, मतलब ये सब कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास किया, उसके सामने आपको अपील में जाना है, तो यू कैन गो फॉर कमिश्नर अपील। उसके ऊपर भी अथॉरिटी है, दैट इज इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। और उसके उसको आपको लगता है कि ये भी सही काम नहीं कर रहा है, मेरे से टैक्स मांग ही रहा है, तो उसके ऊपर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। यू कैन गो टू दी सुप्रीम कोर्ट। ओके, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। ओके, तो ये अपीलेट अथॉरिटीज है। जो लोअर लेवल पे जो काम करते हैं वो असेसिंग ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब ये चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं।
और देखो इन इनकम टैक्स देयर इज अ स्पेशल अथॉरिटीज आर आल्सो क्रिएटेड, दैट इज द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ओके, तो आप टैक्स नहीं भर रहे तो आके आपकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर, उनको लगता है आपने अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक किया है, या तो सॉरी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक किया है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया है, तो इन दैट केस वैल्यूएशन ऑफिसर्स आर आल्सो अपॉइंटेड। और सी ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए आपको मैंने आज सुबह में ही बताया कि व्हेन यू डू द ट्रांजैक्शन विद द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, देन ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, आपको एग्जांपल भी दिया था कि फॉरेन में टैक्स आपको यहाँ कम टैक्स पे करना पड़े, तो यू अरेंज सम ट्रांजेक्शन इन दैट वे दैट सपोज यहाँ से दुबई में मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ 100 रुपए में खरीदा है और मुझे दुबई में 700 रुपए में बेचना है, तो क्या होगा, 600 रुपीज प्रॉफिट विल गेट बुक हियर। तो मैं क्या करूंगा, मैं दुबई में अपनी एक दूसरी ब्रांच ओपन करूंगा और यहाँ से 100 रुपए में ही दुबई भेजूंगा, और फिर दुबई जाके वहां 700 रुपए में बेचूंगा, तो यहाँ इंडिया में कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, और आई विल नॉट पे द टैक्स। और दुबई इज ऑलरेडी टैक्स फ्री कंट्री, तो वहां पे अभी अभी चालू हुआ है 2-3 सालों से दुबई में टैक्स, अदरवाइज इट वॉज अ टैक्स फ्री कंट्री, तो वहां बहुत कम टैक्स रेट है, वहां टैक्स ना भरो, यहाँ इंडिया में भरो। तो ऐसा ना हो इसीलिए ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रॉपर प्रोविजन बनाए, तो उसको रिव्यू करने के लिए देर इज अ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ऑल्सो। ओके, देखो हर एक का काम क्या है हम देखते हैं। देखो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसका क्या काम है, तो इट एक्ट एज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी, मतलब पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स की पॉलिसीज कौन बनाता है, इट इज अ सीबीडीटी। इट इज एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन द डायरेक्ट टैक्स मैटर, इज इश्यूइंग द सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। ओके, मतलब इनकम टैक्स एक्ट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ी तो वो डिपार्टमेंट के लोगों को रेगुलेट करने के लिए सर इट इश्यूज दी सर्क्यूलर्स, और सी इट इश्यूज द नोटिफिकेशन and ensuring that यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑल ओवर इंडिया। तो इसका काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग का काम है सीबीडीटी का। फिर चीफ कमिश्नर क्या करता है, तो इसके नीचे के जो ऑफिसर है उसको सुपरवाइज करता है, तो सुपरवाइज दी सबऑर्डिनेट ऑफिसर, रिवाइज द ऑर्डर, अगर लोअर ऑफिसर ने कोई गलत ऑर्डर दिया है तो यू कैन गो फॉर रिवीजन एंड आस्क टू द अपर अथॉरिटी टू रिवाइज द ऑर्डर। ओके, ओवरसीज द टैक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर jurisdiction एंड एंश्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स लॉ, मतलब इसका काम क्या है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स लॉ हो और मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट हो। प्रोसेसिंग ऑफिसर क्या है, उसको उसका काम क्या है, तो इनकम का असेसमेंट करना, जरूरत पड़ने पे नोटिस इश्यू करना, स्क्रूटिनी का, रीअसेसमेंट का, वेरीफाई करना रिटर्न को, और डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटीज, ये काम असेसिंग ऑफिसर का है। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करता है, आपको मैंने बताया फेयर मार्केट वैल्यू, बहुत बार कॉन्सेप्ट हमने पीजीबीपी में पढ़ा, कैपिटल गेन में पढ़ा, अदर सोर्सेस में पढ़ा। तो फेयर मार्केट वैल्यू का वैल्यूएशन का काम ये वैल्यूएशन ऑफिसर करते हैं। उनको डाउट लगता है कि दिस असेट इज नॉट परचेज एट दी परसी वॉट एवर यू हैव सोन, इट इज इट्स वैल्यू इज नॉट एट फेयर वैल्यू, तो दे कैन do the valuation. So assess the fair market value of the asset. Cases involving the dispute on valuation. Valuation से related कोई dispute है, तो valuation का वो asset का valuation करने के लिए, अगर अपने कैपिटल गेन टैक्स वो वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, वेल्थ टैक्स वो वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, जरूरत पड़ने पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद वैल्यूएशन करता है, और फॉर दैट दे हैव अपॉइंटेड द वैल्यूएशन ऑफिसर। ओके, इनका काम, वैल्यूएशन ऑफिसर का काम वैल्यूएशन का है। टैक्स रिकवरी ऑफिसर, मतलब कोई किसी को नोटिस भेजा है कि भाई टैक्स भर दो, आपको भरना ही है, ये ऑर्डर है, लेकिन नहीं पे कर रहा है, तो जरूरत पड़ने पे उसकी प्रॉपर्टी को वो सीज कर लेगा। ओके, और टैक्स रिकवर करने का काम ये टैक्स रिकवरी ऑफिसर करता है। तो दे एनफोर्सेस द रिकवरी ऑफ द ड्यूज बाय अटैचिंग एंड सेलिंग द डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का काम करता है, एंड एंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द रिकवरी नोटिस, बिन नोटिस दी है रिकवरी की, उसका प्रॉपरली रिकवरी का काम करता है, ना रिकवरी हो पाए तो उसकी असेट भी जब्त करने का काम करता है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर क्या करते हैं, तो दे डील विद द इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन द एसोसिएटेड एंटरप्राइज एट आर्म्स लेंथ प्राइसेस, कि क्या आप आपकी जो भी रिलेटेड पार्टी उसको क्या प्राइस से गुड्स बेचते हो। ओके, वेदर इट इज एट आर्म्स लेंथ और नॉट। आर्म्स लेंथ का मतलब जो प्राइस पे मैं दूसरे किसी को बेचता हूँ वही प्राइस में मैं अपनी रिलेटेड पार्टी को बेचना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आर्म्स लेंथ। तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो,
वो देखने का काम ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर करता है। कमिश्नर अपील, यू नो दैट कि लोअर प्रोसेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिए हैं वो ऑर्डर प्रॉपर नहीं है और कोई असेसी अपील में जाना चाहता है तो वो कमिश्नर अपील को अपील कर सकता है। ठीक है, उसको वहां पे भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो कमिश्नर अपील के ऑर्डर के ऊपर अगर आपको जाना है तो यू कैन गो टू दी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। सपोज वहां पे भी आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला तो इसके ऑर्डर के ऊपर आपको अपील करनी है तो यू कैन गो टू दी हाई कोर्ट। और सी, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर भी अगर आपको अपील करनी है तो यू कैन गो टू दी सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो दीज आर दी वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटीज। देखो इनका काम क्या है। The income tax authorities exercise their power under the Income Tax Act 1961, which include the assessment. तो assessing office income tax authority क्या करती है? Assess the total income of the taxpayer and determine the tax liability. जरूरत पड़ने पे ये 143(1) मतलब इंटीमेशन आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया उसकी नोटिस देगा। 143(2) स्क्रूटिनी की कि भाई आपकी स्क्रूटिनी में आया आपका रिटर्न तो उसकी नोटिस देगा। जरूरत पड़ने पे किसी की प्रॉपर्टी सर्च लेना है, प्रॉपर्टी को सीज करनी है तो सीजर और सर्च के प्रोविजन। तो ये देखो, इम्पावर टू कंडक्ट दी सर्च एट द प्रीमाइसिस, जो रेड होती है इनकम टैक्स की वो करने का काम वो पावर इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब अथॉरिटीज के पास है। और लगे तो वो प्रॉपर्टी को पोजीशन में भी ले सकते हैं। तो यूज द केसेस ऑफ सस्पेक्टेड टैक्स इवेजन, अगर उसको लगा किसी ने टैक्स चोरी किया है तो वो सस्पेक्टेड टैक्स इवेजन को फाइंड भी करेगा। और सी अगर किसी की अंडर डिस्क्लोज इनकम मिली कि सपोज कोई नहीं पास थी, सपोज એનું તિજોરી ખોલીને કરોડો રૂપિયા કેશ મળી તો પહેલા એને પૂછશે show the source of income. If he is unable to show the source of income, he will ask me, have you disclosed in your income tax return this income? He says no, so he will take this all the property, so he will take the seizure of the property. अगर जरूरत पड़ने पे सर्वे का काम इनकम टैक्स अथॉरिटीज करती है। कंडक्ट द बिजनेस प्रीमाइसिस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लायंस, मतलब वो सर्वे कंडक्ट करते हैं कि भाई सर्वे का काम करते हैं लोग। और अनेबल्स द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, जरूरत पड़ने पे वो समन भी इश्यू करते हैं, मतलब समन टू द इंडिविजुअल के भाई तारे इनकम टैक्स ऑफिस में આવવાનું છે तो समन और डिमांड निकालने का काम ये करते हैं। तो अथॉरिटीज कैन समन द इंडिविजुअल, समन मतलब नोटिस देना कि भाई तू ये ऑफिस में आ, एंड एनफोर्स देयर अटेंडेंस एंड डिमांड द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड यूज विच इज यूजफुल फॉर वेरीफाइंग द कंप्लायंस ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। तो ये काम इनकम टैक्स अथॉरिटी करती है। रेक्टिफिकेशन एंड रिवीजन, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को 154 में रेक्टिफिकेशन भी, अगर कोई ऑर्डर्स है किसी ने पास किया तो हायर अथॉरिटी के पास जाओगे, अपील में जाए भी ना तो वो ऑर्डर का रिवीजन भी हो सकता है। तो रिवीजन का काम भी ये लोग करते हैं। और रिवाइजिंग द एररनियस ऑर्डर विच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे गलत ऑर्डर पास कर दिए लोअर लेवल के ऑफिसर्स ने, उसका रिवीजन के लिए आप जा सकते हो। दैट और रिवीजन में नहीं संतोष मिला आपको तो अपील में जाओ। ठीक है, देखो जरूरत पड़ने पे वो प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनली, अब क्रिमिनल ऐसा प्रूव करने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिंग द प्रोसिक्यूशन। और ऑफेंस में आए हो तो आपको जेल में भी डाल सकता है वो कोर्ट्स के थ्रू। तो सी, इनिशिएटिंग द प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेस सच एज विलफुल इवेंशन ऑफ द टैक्सेस, आपने विलफुली टैक्स इवेड किया है मतलब चोरी की है टैक्स की, और फॉल्स स्टेटमेंट रिटर्न में दिए हैं तो इट इज अ ऑफेंस, गुनो बन से। ओके, इट इज अ क्राइम, ऑफेंस मतलब क्राइम। ओके, एंड imposing the penalty for non-compliance with the tax laws such as late filing of return और non payment of taxes के लिए पेनल्टी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी इम्पोज कर सकती है। और अगर आपका पिछला टैक्स है तो आपके ये साल की डिमांड के सामने एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर पिछले साल का आपको रिफंड लेने का बाकी है और ये साल टैक्स भरने का आ रहा है तो उसके सामने एडजस्टमेंट का काम भी करेंगे। तो टैक्स रिफंड एंड एडजस्टमेंट, तो अथॉरिटीज आर एम्पावर्ड टू ग्रांट द रिफंड, मतलब आपने ज्यादा टैक्स भर दिया तो आपको रिफंड भी देगा और आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी तो उसको रिफंड के सामने एडजस्ट भी करेगा। ठीक है, एंड सी अपील्स एंड डिस्प्यूट, तो आपको ये तो बताया कि अगर आपको कोई ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है और यू आर अग्राइव्ड और यू आर नॉट फीलिंग दैट, तो फर्स्ट अपील यू कैन मेक टू दी इनकम टैक्स ऑफिसर कमिश्नर ऑफ अपील। वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला आपको तो इसके ऑर्डर के ऊपर आपको अपील में जाना है तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओ। ओके, और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी आपको सेटिस्फाई नहीं मिला तो सी आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो, और वहां सेटिस्फाई नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। तो दीस आर दी वेरियस की वी कैन शो दैट
These are the various work of the various income tax authorities. So with this, your chapter income tax authorities is also over. I hope that you have understood whatever I have discussed, and if you have any doubt, you can ask me. Okay, and your paper style and paper that in this internal exam papers I will distribute tomorrow. In your regular class, I will discuss the paper style also. Okay, tomorrow. Now tomorrow, so far as I believe, uh, JK sir will going to distribute the paper. Smita Ben and Chidani madam is also going to take the class. I will be there at 10 o'clock. Okay. So whenever I will find that any class is free, either G8 or G5, okay, in that class I will come and in 15 minutes I will distribute the answer sheet and will discuss the paper style. And same way so I will not disturb the other teachers. Okay. And once you will get free, I'll come and distribute the answer sheet and will complete my work. Okay. And then after I'll be available there next 2 hours. Matlab up to 12, 1 o'clock I'll be available. So if you are having any doubt in your answer sheets, will resolve that doubt. You are having doubt in this particular subject, I will resolve this. Okay, and I will discuss the paper style also on tomorrow. Okay, so don't miss tomorrow's lecture, though it is of 15-20 minutes, but I will just discuss the paper style. Your syllabus is hereby over. I have completed your syllabus one day prior to the date which I have told you that I will complete on 21st, but on 28th itself our syllabus is get over. I have covered all the points which is mentioned in the syllabus. Okay, and all are covered, but no doubt in few chapters I have uh, reduced the difficulty level. Okay, but it was due to this paucity of time, and time constraint was there. There was a flood due to some my family problem. I have not came in last week for a few days, and these are all reason. But see, don't worry, your paper will be good. Okay, we'll discuss about the paper on tomorrow. Do you have any question? If you have any question, you can ask me. I stop the recording here.